Yep. इंसान अपने जीवन में चाहे जितनी भी धन संपत्ति, सुख साधना की प्राप्ति क्यों ना कर ले, लेकिन उसका स्वास्थ्य ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। ये कहावत सुनी हम सबने है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में इस बात को हम कहीं भूल गए हैं। देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 70% समस्याएं गलत जीवन शैली के कारण ही होती हैं। इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए क्रैक द वेलनेस कोड (CWC) ग्लोबल की शुरुआत सिलिकॉन वैली में की गई थी। CWC एक गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और गैर व्यवसायिक संस्था है जो हर उम्र के लोगों की वेलनेस यानी कि कल्याण को बढ़ाने की कोशिश करती है। अपने शरीर और मन की देखभाल करो, ये ही वो जगह है जहां हमें हमेशा रहना है। CWC सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक जबरदस्त वेलनेस मूवमेंट की तरह जाना जाता है। सिलिकॉन वैली में अपने जबरदस्त काम से CWC ने अमेरिका में रहने वाले ना जाने कितने भारतीय मूल के लोगों की जिंदगी बदली है और अपनी इस अपार सफलता के बाद अब CWC ग्लोबल हमारे देश में आ रहा है CWC इंडिया फाउंडेशन के नए रूप में। वेलनेस का मतलब होता है कि हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों का पालन करें ताकि आप समग्र रूप से स्वस्थ और अपना जीवन पूर्ण ऊर्जा से जिएं। स्वस्थ तन में ही रहते हैं स्वस्थ मन और विचार। अगर चाहते हैं खुश रहना तो ना होने दे इसे बीमार। CWC इंडिया फाउंडेशन का लक्ष्य है 5 साल में 50 लाख लोगों की खुशहाली को बढ़ाना और इसके लिए जो मंत्र बनाया गया है वो है ई एडुकेट, आई इंस्पायर, ई एम्पावर, आई इम्पैक्ट। अब प्रश्न है कि ये कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं ई यानी कि एडुकेट की। CWC इंडिया फाउंडेशन अपने पार्टिसिपेंट्स को कंटेंट के द्वारा एडुकेट करेंगे। ये कंटेंट आपको ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर और ऑफलाइन हमारे वेलनेस रिसोर्स सेंटर पर उपलब्ध है। वेलनेस रिसोर्स सेंटर एक ऐसी जगह है जहां आपको स्वास्थ्य से संबंधित सभी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। ये रिसोर्सेज विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए हैं और यहाँ पर आपको और भी सेवाएं उपलब्ध होंगी जैसे कि योग, प्राणायाम, स्वस्थ आहार के बारे में जानकारी और लाइव वेलनेस सेशंस का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और सपोर्ट ग्रुप्स के द्वारा स्वास्थ्य विशेषज्ञों से भी जोड़ते हैं जो आपको वेलनेस पर रिसर्च बेस्ड जानकारी देते हैं। अब आते हैं आई यानी कि इंस्पायर। डॉक्टर्स, वेलनेस प्रैक्टिशनर्स और हमारे हेल्थ हीरोज के सहयोग से आपको वेलनेस के लिए प्रेरित किया जाता है। ई यानी कि एम्पावर। सहभागियों को सपोर्ट ग्रुप्स, वेबिनार्स, वेलनेस रिसोर्स सेंटर तथा और भी अन्य प्रकार की गतिविधियों से वेलनेस को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए सशक्त करते हैं। आई यानी कि इम्पैक्ट। जैसा कि हमने बताया CWC इंडिया फाउंडेशन का अगले 5 साल में कम से कम 50 लाख भारतीयों की वेलनेस पर काम करने का दृढ़ संकल्प है। CWC इंडिया फाउंडेशन वेलनेस के 10 अलग-अलग आयामों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये है फिजिकल वेलनेस मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस मतलब भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, कल्चरल वेलनेस, सोशल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, लीगल वेलनेस, टेक्निकल वेलनेस। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, लेकिन जब स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो हम उसमें बहुत से देशों से पीछे हैं। आज भारत ग्लोबल वेलनेस इंडेक्स में 156 देशों में 140th रैंक पर है। आपको और हम सबको मिलकर इस स्थिति को बदलना है और भारत को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प से जुड़ जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडस वेलनेस कोड के द्वारा आयोजित इस स्पेशल सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे एक ऐसे कहना चाहिए प्रेरणादायी पर्सनालिटी के साथ में जिन्होंने न सिर्फ कैंसर को जीता
बल्कि अपने जीवन को एक नई पहचान दी, और अपने इस नए जीवन के साथ में उन्होंने करोड़ों लोगों को भी बहुत इंस्पायर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रुति सेठी की। श्रुति, आप अगर उन्हें देखें तो शी इज अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी की मालकिन है, और शी इज अ फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, फाउंडर अवाना हेल्थ। एंड कहना चाहिए कि इन्होंने जो हासिल किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और ये हम उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे। पर इसके पहले मैं एक बात आपसे बता दूं कि न सिर्फ उन्होंने कैंसर को जिया है, उस परेशानी को झेला है, उस समय की उनकी जो मनोदशा थी वो कैसी रही, उन सब की जानकारी हम लेंगे, और अब ये क्या कर रही हैं इस बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं श्रुति सेठी जी से। श्रुति, आपने कैंसर को कहना चाहिए पछाड़ा है, उस पर विजय हासिल की है। तो उसके पहले जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, यू हैड बीन अ फैशन डिजाइनर अर्लियर एंड द ब्रांड एम्बेसडर आपका रहता था। तो वो कौन सा टाइम था जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है, और क्या सिम्टम्स थे? हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जी? Thank you, Dr. Rashmi, for such a wonderful introduction. And I just want to ask you, English, will everybody be comfortable in English or Hindi? Because I can speak in both languages. So whatever are इंग्लिश रहे तो ज्यादा अच्छा है। English. Okay. या इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड। A mix of both. Okay, that's even better. Yes, yes, yes. Thank you so much for giving me this opportunity to CWC. And finally, we are doing this seminar. So cancer 2016 में मुझे डिटेक्ट हुआ था, और जैसे कि हम ये कैंसर का वर्ड कोई भी सुनता है तो उसको लगता है कि क्या पता नहीं, मतलब इट इज सच अ शॉकिंग इवेंट. I was 34 years old and I really had no clue कि कैंसर होता क्या है और ये कैसे हुआ, बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा कैंसर के कोई किसी को कैंसर नहीं हुआ था. आई ओनली माई ग्रैंडफादर हैड कैंसर, और मैंने देखी थी उनकी जर्नी एंड इट वाज सो पेनफुल. सो पहले जब मेरे को वो समझ में आया कि डायग्नोसिस जब ये हुआ, तो उसके पहले भी जैसे जब आप बोल रहे कि क्या सिम्टम्स थे, क्या 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 महसूस कर रही थी, जब अब मैं when I look back, I can trace the steps well, that I was always falling sick. My body was always giving me signs a year before, or I think 2 years before that vitamin D, B12 levels were very low. I also had bouts of acidity, मतलब extreme acidity होती थी, bloating होती थी, और मुझे डेयरी और ये भी कभी सूट नहीं होता था, बहुत पिंपल्स होते थे, एंड आई वाज फॉलिंग सिक एंड लेथार्जी. एंड देन वन मेजर thing which I realized, that I was craving for sugar, like, and junk food at least 2 or 3 months before getting the diagnosis of cancer. So these were the symptoms, but generally we say, oh, we are stressed, or you're just too tired, and the body wants those kind of food. So I was just feeding it without knowing what it can do to my body. And of course, then there were like bouts of sicknesses, bouts of me getting extreme fatigue. And I was also at that stage of my life where there was extreme stress around. But then, of course, when the diagnosis hit you, it's just like either you, मतलब मुझे ऐसा लगा वो एक सपना है, और शायद मैं अपने आप को पिंच करूंगी and I just wake up and everything will be better. But of course, then the reality hits, and you have to go through the whole procedures of getting your PET scans done, then going to various doctors and getting it's so confusing. कोई एक बोलता है, कोई क्या बोलता है, and then you go to the Google. तो Google जब आप सर्च करते हो तो और भी confusion होता है. So the first doctor actually my brother contacted was Dr. Millie, and she's here. I'm so glad that she's here, and she's seen, of course, my journey. And I was so confused as to, and I was very, very, very angry actually. मैं बहुत ज़्यादा
गुस्सा थी कि मैं इतनी यंग एज पे आई डोंट डिजर्व दिस, मुझे ये क्यों हुआ है, मेरी बॉडी में ऐसा क्या हुआ है कि कैंसर हो गया है। सो देन रिसर्च करते हुए जब मैंने समझा कि कैंसर एक्चुअली क्यों होता है, क्या क्या चीजें होती है जिससे कैंसर हो सकता है, और जब मैं ट्रेस कर रही थी अपने स्टेप्स बैक, देन आई वाज डूइंग द सेम थिंग, माय बॉडी वाज एक्चुअली गिविंग मी सिंपल्स एंड आई वाज लीडिंग अ very a lifestyle which was unconscious, I mean unconsciously living the not really looking at the food और न्यूट्रिशन, और मेरे हिसाब से हेल्थ सिर्फ जिम जाना या फिर अपनी बॉडी को अच्छा रखना या अपने आप को अच्छा रखना वही था। इंटरनल हेल्थ क्या है कैसी है, आई रियली हैड नो क्लू। मतलब उस टाइम इतना अवेयरनेस भी नहीं थी मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर स्ट्रेस के बारे में। तो आप बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए फिर जब जब ये सारी चीजें समझ में आई लाइफ में, तो उस टाइम तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड दिस इज लाइक, उस टाइम ही मेरे बहुत क्वेश्चंस थे, और फिर मैं बाहर काफी लोगों से समझती थी, डॉक्टर से समझती थी, पेशेंट से समझती थी कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपको कैसे डायग्नोसिस हुआ। तो दैट inquisitiveness was there and I really didn't wanted to I thought that conventional way is not the only way. I don't know, because my mother was also into this field and she always believed in curing oneself naturally, so I had this inclination towards holistic life anyways, because not taking too much of medicines and stuff. So I started actually inquiring a lot of things. And of course, in the state of confusion, you do certain things good and you do certain things wrong. So that experiment, I started experiment a lot. इट वॉज सो वंडरफुल। सही बात है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता या कुछ भी हमें परेशानी होती है तो हमारी इच्छा होती है कि हम उस बारे में जाने, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि गूगल कर लो, और गूगल आंटी हमको जो भी समझाएं, या जितना गूगल में नॉलेज कहते हैं, कई बार बहुत ज्यादा जब मिलता है ना तो भी परेशानी हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें। पर कई बार रास्ता भी निकल आता है, जैसे कि अभी मिली, जैसे कि श्रुति बता रही थी। तो श्रुति, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो रिसर्च की उसमें आपने क्या पाया कि जैसे आपने कहा कि आपने जंक फूड पहले आप बहुत खाते थे और आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा गड़बड़ था, तो इसलिए आपने देखा कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपने क्या क्या और जाना, हमारे दर्शकों को बताइए जी। एक्चुअली जब रिसर्च करी थी तो मैंने यही समझा कि कोई भी डिजीज का एक रूट कॉज होता है, और वो जो रूट कॉज होता है वो समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल आपकी, आप कैसे जी रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, व्हाट इज द फूड यू आर ईटिंग, सेकेंडली हाउ मच, व्हाट इज योर एक्सरसाइज लाइक, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हो। एक्चुअली मैं जब ये सब रिसर्च कर रही थी तो देन आई फाउंड आउट दैट आई वाज नॉट इवन ब्रीदिंग प्रॉपर्ली, लाइक when I went to a yoga class and all that, even वो breath I was breathing very shallow। तो ये सारी चीजें भी मुझे उस टाइम ही समझ में आई कि you know the lungs are not taking oxygen only properly, because वो awareness ही नहीं थी। Secondly, the stress levels, I mean how stressed you are, I mean कितना आप टेंशन ले रहे हो लाइफ में, और even when you are, even this small things which you think आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, यू थिंक दैट कि ये तो सभी लोग, मैं समझती थी ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और ये इस जने को भी स्ट्रेस हो रहा है, उस जने को भी स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस तो एक नॉर्मल लाइफ का पैटर्न है। बट हर एक का अलग अलग तरीका होता है उसको उसको एक्चुअली एनालाइज करने का, उसको इनटेक, हाउ डू वन टेक स्ट्रेस इज दिस वेरी, it is absolutely individualized। So my body was and my mind was not able to take stress, I was keeping that, uh, emotionally I was very low at that point of time, and I was keeping it to myself, I was just not venting it out to someone, because I thought that probably it's just very normal। Thirdly, I of course when I understood that cancer, with regards to cancer, is the lack of oxygenation, and the body is when the body is acidic, so my body was actually very acidic when मैंने जब वो test किया, you know the tongue test which you do, my it was around
5 आई थिंक स्केल पे, तो मेरी बॉडी एक्चुअली एसिडिक थी। तो फिर एक ये मिनट सारे जब एक मिनट श्रुति, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने पीएच टेस्ट कैसे किया, क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड दे विल आल्सो लव टू अंडरस्टैंड कि whether they can also perform it. Please. Yeah, so basically what happens is that you get the pH strips from the any medical store. I got it from US because my mom lives in US. And you spit in 1 spoon, like आपका saliva आप spit करो spoon में, and then you put that strip in that kind of saliva for some 30 seconds. और वो उसका एक पैरामीटर होता है, if it's to the greener side, it is the pH level is around 7 to 8, but if it's to the yellow side, then it's acidic. So my body was actually acidic at that point of time. So वो obviously जब acidic body होती है तो then inflammation होता है, and then you can get any disease. So the first thing is that I understood that for living a disease free life, the body has to be alkaline. So then I started working on my diet. I started working on और मैं बहुत ही acidic food खा ले रही थी, like drinking teas and coffees and eating absolutely junk food, which was not doing any good to my body. So first thing was obviously the nutrition is so important, and once you start doing all these things in a proper organized way, so body, of course, in within 2-3 weeks, it starts feeling better, and the symptoms also start. If you start feeling better in your mind, better in yourself, also sleep, और बहुत सारी issues जो थे, fatigue, starts becoming better. तो एक ये जो सारी चीजें थी जो एक साथ, आई थिंक जब हम बात करते हैं होलिस्टिक की, जब आप ट्राई करते हो कि हाँ let's treat anybody holistically, so all these factors matter a lot. Your nutrition, the way you think, the way you breathe, the way you sleep, the way you are living your life, the way you're eating food, what is the kind of environment. अगर आप बहुत ज्यादा environment में ऐसे आप pollution में रह रहे हो, या some chemicals are around you, then that also you breathe in. And one very very important thing which I also figured out कि आप जो केमिकल्स, जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो आपके बॉडी पे या आपके बालों पे या आपके स्किन पे, उसमें भी इतने केमिकल्स होते हैं, and those can slowly seep inside you and can also create a lot of disturbances in your body. धीरे धीरे एक साथ तो कोई कभी कैंसर होता नहीं, it takes years and years to develop cancer in your body. So all these factors, I think I changed everything from my detergent to my shampoo to even plastic around. घर में जो कभी कभी एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते थे, वो भी हमने चेंज, everything we changed. I changed everything around me. So this was a very like important point कि lifestyle is not only nutrition, it is everything around you. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर बात कही है आपने, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमें बनाता है, ये बात तो सही है, पर जैसे हम रहते हैं वैसे ही हम बनते हैं, ये भी बात बहुत सही है। तो आपका रहना, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, और कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। ये वही बात है कि जब तक आंखों की जांच ना कराई जाए तो पता नहीं चलता कि हम देख कितना पा रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि दुनिया इतनी ही है या ऐसी ही है। तो बहुत सुंदर बात कही आपने श्रुति। हाँ, हम आगे भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब ये जाना और इससे आपको कितना फायदा हुआ और आपको कैसा लगा। जी। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, जब मेरे को कैंसर हुआ था तब आई वॉज लिविंग इन अ कंप्लीट डिनाइल. मुझे आई वॉज लाइक, मैं गॉड से लड़ रही थी उस टाइम कि वाई नाउ. And I was going through a period of my life where I was very emotionally low. And I think I have no I want to share this with the audience because everyone goes through a very low period in their life. I was going through, my store was shut because I was not able to work.
I was completely into this state of mind where, you know, I was going through a separation with my husband that time. I was living all of a sudden from living in a family to living all by myself, was took a toll on my finances, took a toll on my mental health. And तो जब ये कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो मेरे लगा कि आई डोंट थिंक सो आई डिजर्व दिस, व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम मी, व्हाई राइट नाउ व्हेन आई वाज फेसिंग so many issues at this point of time. So जब ये सारी चीजें हो रही थी, देन ऑल्सो लाइक आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, मुझे जाना ही नहीं है, लेट मी फाइंड अनदर वे वेयर आई कैन स्टार्ट एटलीस्ट. और मुझे बोल दिया गया था कि तुरंत ही कीमो करो, तुरंत कीमोथेरेपी करो, फिर रेडिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज आई वाज एट स्टेज 2 एंड द ट्यूमर वाज हियर. सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड मोर सॉल्यूशंस because I thought that this is not the only way of treating cancer. There has to be some way for preparing your body or something that chemotherapy के side effects तो कम हुए इससे. और तब मैंने बहुत सारे therapy start किए, yoga therapy. Then I started, of course, I met Dr. Millie and we started ozone therapy. I started doing a lot of acupressure, acupuncture. So many things which actually helped me during that journey, and I started feeling better. Of course, I mean, I was in pain and I couldn't sleep properly. I started losing weight, and you know, nutrition also I was doing by myself. So जो भी पढ़ रही थी उसके उस पे implement कर रही थी, and with the guidance of Dr. Millie, I did little bit of here and there, but that acceptance was not there. It was absolutely not there. But once I started accepting that, you know, now that you have cancer, you have to deal with it, just live one day as it comes. And that realization, when it hit me, I think I started to heal internally. And you know, I worked a lot on my mental health in the sense of forgiveness and just letting go of things and not controlling my life, because you never know what happens. And then I kind of, when we started the chemotherapy, I was in, and I started proper nutrition, like plant-based nutrition, within a span of 4 chemos. When we checked our PET scans, and I don't know what happened, but I told the doctor that let's check the PET scans, and we got 99% resolution in that. And I was so happy that all of this worked. And of course, then I completely refused radiation. I wanted this time to heal my body, and I had this belief that ki, let me give a break from this therapy, from this conventional therapy. I had this belief, so मतलब इतना बिलीव था अपने आप में उस टाइम हो गया था, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि मेरे को लगा कि आई वांट टू टेक अ चांस दिस टाइम. That's so great, so great. आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, कई बार हम बहुत सारी चीजें अपने साथ में पालते रहते हैं कि हमारे भावनाओं को, हम दूसरों के साथ में जो भी हमारे फीलिंग्स रहते हैं, लाइक ग्रजेस रहते हैं, या हमारे कहना चाहिए किसी के साथ में कुछ, तो हम उसको मन में गांठ सी बांध लेते हैं. तो जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, और क्षमाशीलता जो कहते हैं बहुत ही अच्छी होती है कि दूसरों को भी लेट गो कर दें, तो हमारे को एक अंदर से कहना चाहिए कि काफी पॉजिटिविटी मिलती है. एंड सच ए वंडरफुल थिंग, आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं. And we are so proud of you, Shruti. You have shown the world that okay, this lifestyle, this we can change the way we want to live. And मैं एक बात यहाँ पे जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्रुति को हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था. एंड व्हेन शी वाज डायग्नोस, इट वाज सेकेंड स्टेज में था, और थर्ड स्टेज के, सेकेंड और थर्ड के बीच की स्थिति आ रही थी. और जब इन्होंने अपने आप को पूरा चेंज किया और फिर उनको लगा कि शी इज वेरी गुड, तो उन्होंने पैट स्कैन वगैरह कराया था. जी श्रुति, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, पर इतनी कहना चाहिए आपकी जीवनी इतनी रोचक है, इतनी इंस्पिरेशनल है कि बीच बीच में मैं टोकने से रोक नहीं पा रही हूँ.
And I think you'll be here with me. तो आगे हम फिर से आपसे सुनते हैं। जी बताइए। ये जो आप बोल रहे हो ना वो गांठ, आई रियली लाइक दिस थिंग दैट वो गांठ थी और वो गांठ खुलने लग गई जब ये सारी चीजें जब आपने व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय मेंटल हेल्थ, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फॉरगिवनेस, दैट लाइटनेस केम इनटू मी एंड आई सेड व्हाट इज दिस लाइक। एंड जब कैंसर हॉस्पिटल जाते हो और जब इतने सारे लोगों को देखते हो तो आप ऐसा लगता है कि यू आर सो प्रिविलेज्ड। No, I was so privileged because people are at that stage where they are almost at the end of your life, and we still are young. I was still young and I was like, no ways, I'm not giving up so soon and I have to do something. जब इतना खुद को ही ठीक कर रहे हैं इतने सारी चीजों के साथ, then that thought came into my mind that time that I have to do something because I gained so much knowledge this time and people don't know about this. और मैं जब भी हॉस्पिटल जाती थी, जब मैं देखती थी कि पेशेंट्स को सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कैंसर हो रहा है और फिर वापस वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो मेरा उनसे सब एक ही सवाल करती थी, डिड यू चेंज योर लाइफस्टाइल, डिड यू चेंज एनीथिंग यू एट, डिड यू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। एंड दे वर लाइक, डॉक्टर्स ने हमको कुछ बताया ही नहीं है इस बारे में कि क्या खाना चाहिए। वो पाव भाजी खा रहे थे, बड़ा पाव खा रहे थे while taking chemotherapy and I was like shocked. और मुझे ऐसा लगा कि I think I have come to this, or I have been given cancer, or I'm going through this because I'm one of the person who can actually change one's lifestyle, or can at least tell people that there is a way and do not give up, and one should understand what is the root cause. So that's how, and I used to tell Dr. Millie also that time कि Dr. Millie कुछ करना है मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि मैं तो फैशन के बैकग्राउंड से आई थी, मुझे लगा कि मैं क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, बट वो फायर थी। सही बात है, जैसे कहते हैं ना, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है। yes. तो आपने अपना नजरिया बदला जीवन के प्रति, अपने खान पान के प्रति, और पूरा के पूरे अपने कहना चाहिए जीवन को बदल दिया। तो बहुत सुंदर। और ये न सिर्फ आपने खुद ने बदला बल्कि उन लोगों को भी मदद की जो कि आपके साथ रहे, आपने जिनको देखा कैंसर से और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों से लड़ते हुए। और ये हमारे लिए भी बहुत ही कहना चाहिए सोचने वाली बात है कि जीवन को कितनी आसानी से जिया जा सकता है। बस एक हमारी सोच बदलने की देर है, खान पान के ऊपर ध्यान देने की देर है, एंड एनीथिंग कैन बी रिवर्स्ड। द बेड जितना भी खराब से खराब हो वो भी ठीक किया जा सकता है। तो सोच का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उसकी जीती जागती मिसाल है श्रुति। सो श्रुति, उसके आगे क्या हुआ ये बताइए, हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ, तो फिर आई थिंक ये जब हुआ, जब सब ठीक हो गया, एंड आई वाज डिटरमिन्ड टू गेट बैक, और within 3 to 6 months I was very very disciplined. I started taking alternative therapies more, and I shifted to Jaipur, and I was very much into yoga, meditation, nutrition, and I came, and then there where I started talking to people, I got this, मेरा जो नजरिया था वो हेल्थ को लेकर बिल्कुल चेंज हो चुका था, एंड पीपल वांटेड टू टॉक अबाउट इट, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी इश्यूज, देन आई स्टार्टेड giving them tips, and then I started formally educating myself. I took a couple of courses, then I started working with Dr. Nandita and Sharan, and then during COVID actually I got this I got this thing that I need to do something more. I need to create systems in place where any patient, because मैं इतने लोगों से मिली थी अपनी जर्नी में, इतने सब कुछ मैंने बात करी थी, and I had so much of knowledge. I thought I need to make it structured. I need to, कोई भी कैंसर पेशेंट जब कोई कहीं पे भी अगर मुझसे बात करता है, they need to be educated. They need to have a support system, because even family goes through so much. आप तो ठीक हो, लेकिन जो फैमिली है उनको पता ही नहीं कैसे डील करना है, क्या करना है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, द वे पीपल आर अराउंड यू. I thought I have to do something, because this is so important for me to like create a support system around. And then we kind of I started working on my own startup, which is Avana Health. And then we specifically work with a lot of cancer patients and
people who are going through chronic issues, and we connect them with proper doctors, people who have integrative knowledge, who have knowledge about yoga, meditation, and give this ecosystem around you कि उनकी जर्नी जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अच्छे से वो निकाल ले जर्नी, because cancer can be very very devastating when you get the diagnosis. But when you have this support system, when you know who you can talk to, it becomes easier, and then it gets handy when you get this information. So that was the thought, and that's how I started Avana. And we work with a lot of cancer patients. We connect them to a lot of doctors, and we connect them to a lot of experts like Dr. Mili, and we give this ecosystem so that unka jo wo theek bhi rahe, and the quality of life also improves. सो गुड, सो वंडरफुल। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और आप ऐसे ही करते रहें, लोगों में कहना चाहिए सकारात्मकता भरते रहें, अपने पॉजिटिव पर्सोना से सब जगह खुशियां फैलाते रहें और उनको एक जीवन में नई आशा दें। और इसके हम आपसे फिर जुड़े रहेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। हम मिलते हैं डॉक्टर मिली शाह से। मिली शाह का जिक्र अभी श्रुति ने भी किया था। ये कोई नाम नया नहीं है, ये है ओजोन की मलिका, मतलब कहना चाहिए ओजोन को लाने का जिनको श्रेय है, और जो कहना चाहिए ओजोन थेरेपी के अभी चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ओजोन फोरम of India and trustee of Bisleri Charitable Trust. She is a practicing homeopathic doctor with this, and she has also providing the psychotherapy for the last 21 years. She's right now she's practicing in Mumbai, and she has done lot of work. And कहना चाहिए she is a pioneer in the ozone therapy. And she has trained many doctors, and she has conducted many seminars, webinars, and she has also been associated with the Lady Ratan Tata Institute for Cancer Research. She is on the advisory panel of Devam Integrated Holistic Hospital, Delhi, and Tumor Clinic in Mumbai. And she has also conducted ozone therapy, not only for the cancer patients, but also for the chronic ailments like tuberculosis and other diseases. Her work has been recognized during COVID times, and she has also published many papers in the journals of the rehabilitation and health studies. Now, आपका स्वागत है बहुत बहुत डॉक्टर मिली। आपसे मिलके बहुत खुद अच्छा लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना, दिल को एक बड़ा सुकून सा मिला आपको मिलके, और आपकी मुस्कुराहट ने तो दिल बाग बाग कर दिया। तो जी मिली, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना समय निकाला और हमारे इस फोरम पे आए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्रुति ने तो अपनी जर्नी में बताया कि उन्होंने कैसे आपको पाया और आपको पाके उनकी कैसे जिंदगी कितनी आसान हो गई। हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे कि how was her condition when she first contacted you, and how you proceeded further. जी, sure. First of all, I thank CWC, and I'm very happy to know wonderful work which they do. And Rashmi ji, that was really nice introduction. When I saw Shruti in the waiting room of our small little clinic, which is in Andheri, I saw a girl who was in a denial, but she wanted to do something different. She wanted to heal herself naturally. So though she was told that she has a second stage Hodgkin's lymphoma, her mother was a strong inspiration for her to heal herself naturally. And I think her brother, when he contacted me, he's saying, have you worked in cancer? So I said, of course, I used to work with a Lady Ratan Tata radiation department with Dr. Arvind Kulkarni, where we were promoting ozone therapy, and we were establishing the fact that ozone therapy improves side effects of radiation, reduces the tumor metastasis. So basically, it does not spread that easily in the patient. And we were
very successful in establishing that fact on first 83 patients, which we were treating in 2005 to 2007, where we were doing this work. So when Shruti, I mean, from 2007 to 2016, of course, we had seen many patients of cancer. Either they were taking chemotherapy, not chemotherapy. We were using ozone therapy as a supportive adjuvant alternative therapy. So it's like a jigsaw puzzle. When the cancer patient comes to, they have a lot of problems. And we were there to just fix them and take their therapies, conventional therapies better and fight the cancer easy. So when I saw Shruti, first of all, I told, that there are 3 P's which are very important: psychology, pathology, and physiology. So I said there is somewhere psychology and physiology has a confusion where it has manifested as pathology. So as we say, all cancer patients have some metaphysical means mind and body connection somewhere wrong, and that leads to a pathological change. And I strongly believe, when you say that cancer is only genetic or mainly predisposition of genetic, but I strongly believe that it is a multifactorial disease where there is chemical invasion, where there is physical and psychological stress, where is also the environmental stress, when there is inflammation and oxidative stress. So I look at it as a holistic approach when you want to treat cancer. So first, we change a little diet of theirs, we change their outlook, we tell them to detox their mind also. So Shruti के साथ ऐसे हुआ कि उसको आई थिंक मेरे से बात करके और थोड़ा गाइडेंस लेके ज्यादा खुशी मिलती थी. ओजोन थेरेपी और विटामिन सी जो हम करते थे वो उनके फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे काम करता था, बट द टॉकिंग एंड द काउंसलिंग विच वी वर डूइंग in getting her accept that okay, something is wrong and we need to change it. And in this process we really improved her physically and psychologically. And diet, she has done it very well. She has planned her whole day to day. She would do complete without understanding the details of nutrition. She was working as a nutrition for herself. So I see it, and that resulted very well in reducing her CRP markers. CRP is an inflammatory marker, which was very important, to reduce and to feel that she is in a control. So we had the CRP markers very regularly checked up. We used to also see her WBC count, which also tells us whether her disease fighting capacity of her own body, the innate immunity, is improving. We used to also see something called RDW, which comes into CBC. When you check CBC, you have something called red cell distribution width, which was also improving. That means her RBCs were functioning better. So these are the broad criteria which we keep when we are doing ozone therapy and vitamin C therapy. We were telling her that you should improve your body physically so much that even if you take chemotherapy, this body can take that onslaught of chemotherapy, which is required for that particular time. But it will have a holistic benefit. And that we've been doing still now, that we have a lot of cancer patients. Either they take बहुत whatever सुंदर बात कही आपने कि फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो कीमोथेरेपी को आप सहन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका असर हमारे जो डिजीज पार्ट है उसी के ऊपर होगा. ऐसा नहीं है, उसका हमारे पूरे शरीर के ऊपर भी असर होता है. और जो जहाँ बीमारी है वहां तो काम करता ही है, और जहां बीमारी नहीं है वहां पे भी वो असर करता है. और इसी को हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स हैं उसके, या उसका एडवर्स इफेक्ट्स हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप कितने स्ट्रांग हैं. एंड डॉक्टर शाह, आपने ये बहुत ही सुंदर बात कही, एंड आई फुल्ली एग्री
कि अगर आप अपने आप को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, then any pathological condition you can deal very nicely. Please carry on, डॉक्टर शाह, आप बहुत ही सुंदर बात बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं जी. So the three-prong which I said, psychology, physiology, and pathology, it's most important in any disease. So please look at your evolution of the disease, कैसे ये बढ़ा है. So कहीं तो कुछ गड़बड़ है इधर साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में, तो आपको पैथोलॉजी है. So the main reason which Shruti also said that she was not breathing properly. Now our body is made up with every cell which requires oxygen for cell respiration. ये थोड़ा बायोकेमिस्ट्री हो गया, पर अगर आप राइट ब्रीदिंग करते हैं तो आपको राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. ये राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल improve योर फिजियोलॉजी एंड इट विल स्टॉप अगेंस्ट पैथोलॉजी. सो ये एक चेन है जो, और वी कॉल इट अ सर्कल. इट्स अ सर्कल वेयर you need to do something right to have the other things in a proper fashion. So breathing right was very important, which Shruti said because of her stress level, she was having a shallow breathing, or she was not doing the body detox properly. Now body detox is also एक रश्मि जी ने बताया था, जो हम खाते हैं हम वैसे हैं, पर यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ. We are what we eat, मेटाबोलाइज, एब्जॉर्ब एंड डिटॉक्स. सो हम ईट तो कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन अपने गट पे रिलेटेड है, मेटाबोलाइज अपने लिवर पे रिलेटेड है, और डिटॉक्स अपना फुल बॉडी, द लंग्स, द स्टूल, द यूरिन, एवरीथिंग. सो नाउ ईटिंग करेक्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑल्सो improves and detox will improve. So so ये also एक सर्कल है. ओजोन थेरेपी improves oxygenation of your body. So अगर ओजोन आपने कभी सुना हो तो ये हमारा environmental shield है. अगर 20 to 30 kilometers above the Earth's surface, when you have something called ozone layer, this is in nature. When the nature uses ozone as a shelter from ultraviolet harmful rays of the sun, why can't we use something so similar to improve our cell function? So हम लोग ओजोन थेरेपी बाय एंड लार्ज इन अ इजी वे कि लेमैन को भी समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग इसको कॉफ कोल्ड टू कैंसर के लिए यूज करते हैं. इसको हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, which can be rejuvenation and anti-aging. It can be used to reduce the oxidative stress. अगर oxidative stress और जानना है तो अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड, ये सब result of severe oxidative stress. Now that can also be regulated with ozone therapy, and ozone therapy can be improved in degenerative condition. So ozone reduces inflammation and it helps in improving degenerative diseases. So our cancer is a multifactorial. So it is a combination of oxidative stress and it is a combination of inflammation. Or when you take ozone, we are reducing your inflammation and oxidative stress together. So in Shruti's condition, of course, she improved physically, but her one tumor, which was a cervical node, which was not reducing, and that's where we said that, let us take chemotherapy opinion, and if it required, you should do chemotherapy and ozone and vitamin C. Why? Because there is no side effect of vitamin C and ozone therapy if you combine it with chemotherapy. So आप वो बॉम्बार्ड करो अपने कैंसर सेल्स को ओजोन के कीमो के साथ, और आपके गुड सेल्स को हम ओजोन और विटामिन सी से प्रोटेक्ट करेंगे. और ये कॉम्बिनेशन करने के बाद in our day-to-day busy life, of course, we become so busy that she finished her chemo, and then I did not hear from her for one whole year. I thought to myself, oh my God, I feel that Shruti is doing well and she's perfectly fine. And then I suddenly meet her or I get a call in 2019 or early 20 that, Shruti coming up to say that I have done this functional nutrition. I said, that was your calling.
And that's what, you could do to improve yourself and to improve others. And from there, I have been guiding in few of her cases if she really requires ozone therapy and vitamin C, but she's doing well for herself in her nutrition spectrum. Uh, I tell her, if you really get stuck, please, I can be of help. But she's doing very well for herself, and that's her calling. That by helping others, I think she is getting somewhere good karma, somewhere the positivity from those patients that yes, if I can do it, the others can also do it, and this journey should continue. And that's how I can narrate Shruti Sethi, fighter, and now promoter. So I think that was the journey with ozone therapy and vitamin C, with Shruti. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सही बात है कि जब आप खुद भी दूसरों को अगर कुछ मदद कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, तो एक अपने में भी विश्वास होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, एंड दैट गिव्स, आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाता है उससे कि आप कुछ कर पा रहे हैं. क्योंकि हम जो लोग करते रहे हैं, या कहना चाहिए काफी एक्टिव जिनकी लाइफस्टाइल होती है, यदि उन्हें कुछ भी करने न मिले या कुछ ऐसी हालात हो जाए जैसे कि कैंसर हो जाए या कोई पुरानी बीमारी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर उन्हें लगता है कि दे आर यूजलेस. हम जीवन में किसी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो हमारे जीने का क्या अर्थ है. कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं. तो ये हमें सीखने की बात है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी हार नहीं माने, और हमेशा ये सोचे कि अगर परेशानी आई है, अगर कोई सॉल्यूशन है, या मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी है, बस देखने की जरूरत है, नजरिए की जरूरत है. डॉक्टर शाह, आपने काफी अच्छे से बताया ओजोन के बारे में, और तो हम ये भी चाहिए, अगर आपके पास में इसके बारे में कुछ डिटेल में और हमारे दर्शकों को बता सकें तो बहुत अच्छा लगेगा. Sure. If you can. So here I would like to share a PPT. So it's not, ozone therapy is not only for cancer, but today we were talking about cancer. So I've made that, I have that PPT, but ozone therapy by and large is from cough, cold to cancer. And you will know that in few of the slides. So I'll just share my screen. Is that okay, Rashmi ji? Please go ahead, Dr. Millie. Yes, thank you. Okay, sorry. Okay, sorry, yeah, just 2 minutes. Okay, so first of all, before I start, here I want to say that we do not say that ozone therapy can cure cancer. It can be used as a supplemental adjuvant therapy. It can be used as if you're declined by chemotherapy, by oncologists, that you are not fit to take any chemotherapy or radiation. You can use this as a supportive therapy to improve your quality of life and many more, this. So I don't have any claim in saying that we can cure you without chemotherapy. And so because it is a general platform, I must be very, very clear in the message which I am giving out to you. We use ozone therapy as integrated oncology. Why? Because we want to fix the jigsaw puzzle. The oxygen deprivation to a certain cell, and that cell multiplies and goes into the metastatic phase. This is what the origin of cancer, and this was published by Dr. Otto Warburg, which is a Nobel Prize winner, in saying that all cancer cells are hypoxic to the core.
And when we talk about ozone therapy, it is an oxygen-based therapy. So we are re-establishing oxygenation in the cell. That's why it is relevant to the core for cancer. Now, before we go ahead, we must be very, very clear, why am I doing this therapy? Either I'm using it as improving my health, I'm using it as reducing the side effects, I'm using it to maintaining my other body function. The purpose is very important, and do not falter, so you have to be very focused when you are having a outlook to alternative therapy. It is not a magic wand. It is not that, okay, the session ho gaya. I remember Shruti used to come to our center for at least 3 to 6 months to improve her health to the optimum level. Okay, so it is not like aaj kiya, the session, quick results, nothing like that. Okay, it needs to be continuous. It needs to be giving the improvement holistically to the core. Now, who can take ozone therapy? As I say, cancer to cough cold. So normal immunity also can be taken, ozone therapy. You want to remain the way you look, remain the way you are, to have a fitness level, you can use ozone therapy. You can also take ozone therapy if you're a post-operative patient in cancer and you have a risk of recurrence. You can take who do not respond correctly with chemotherapy and radiation, metastatic cancer, patients who are suffering with side effects, patients. So it can be combined with conventional therapy. It can be taken separately. It can be taken holistically. You can do Ayurveda, homeopathy. You can do multiple, and it can improve. Now, when we talk about cancer, the future of cancer, there are millions of patients of cancer, which were back then, say about 30 years back to now, it has increased rampantly. Why? Because of the lifestyle and the environmental toxins which we have. As Shruti mentioned, shampoo, soap, the frequent uses of dyes, everything leads to toxin in your body, and that can improve. And this is the global statistics. Okay, environmental and cancer, the jigsaw puzzle is already established, and it is confirmed that environmental toxins can increase, or they are carcinogenic. When you are doing, environmental toxins, the pollution which we live with is huge. Okay, there's pollution in food because we have so many pesticides. There's pollution from the young age because everywhere we are using Dettol, everywhere you're using all the, Lysol on the floor. You will be having a hit jet spray. So minimize those usage. It will really improve the environmental toxins. Gender and ethnicity is also very, very important in Pandu. So, certain people are more prone for certain diseases that can be categorized by gender ethnicity. This has a susceptibility, and environmental pollution can affect on, or they have carcinogens. The standard care which we do for cancer is surgery and systemic, which is hormone, chemotherapy, and targeted therapy. But we are forgetting the main root cause, which is why you got the cancer, which was nutrition, lifestyle, diet, and the pollution, the environmental. So we don't do anything to that, and we do only, local and systemic this thing. That is not enough. And that should be, now I think there's a lot of awareness in that a lot of people are looking at lifestyle modification, and they are looking at changing the diet to a great extent to improve their health. That is usually has, now the change has happened from 2005, which I started working in cancer field as integrated oncology, to now. It has changed quite a bit. I do know people that who look for themselves, that how can I be better? That is there, but this is what the standard treatment, and we need to fix this somewhere. If you see chemotherapy, 5-year survival rate, that is also if you take or if you don't take, there is the good survival rate is there.
There is also a side effect of cancer treatment. A lot of side effects can be there. And the main problems which side effects is fatigue. So you don't lead to a normal lifestyle. That is one important. Concentration, cognitive decline, patients become dull and depressed. Pain is another one, and sleep problems. These are the main highlighted side effects which I see in a day-to-day patient, when they come to me for ozone therapy or nutrition therapy when we do. And we need to work on that easily, more efficiently. When you need to look at the side effects, there are certain side effects which are temporary. There are which are long, so we look at the long standing side effects, which is fatigue, sleep, depression, deprived, so that needs to be corrected to improve the quality of life. And we have more than 200 different types of cancer, which can be, so if you look at there is sarcoma, melanoma, there are squamous cell, there's like ample variety of cancer which you can suffer. The holistically, the main reason for cancer is lack of oxygen to that tissue. And as I say, the etiology of cancer is not only genetic predisposition, it has lot of time to do with viral infection. Post that, you can have, cancer. Chemical, which is environmental toxins. Physical and metaphysical, which is your own body stress. Also inflammatory. And that generates lot of free oxygen, or which you call it reactive oxygen species, and which induces genomic damage. When we look at cancer, we have multiple reasons why you can get cancer, and you need to have a holistic approach. And this was recently, in Times of India, that 1 in 10 Indians will get cancer in lifetime because of the toxins, or because of the hormonal changes, or because of the lifestyle which we live with. And what is main important is we need to correct the oxygenation, and you need to control this ROS, that is reactive oxygen species. All reactive oxygen species lead to oxidative stress, leads to inflammation, that leads to pathological condition. So as I was mentioning before, why ozone therapy can be used in cancer is all cancer cells are hypoxic to the cell, which was published, or which was proved in 1931 by Dr. Otto Warburg, who won a Nobel Prize, which says that cancer cells are hypoxic to the cell. And if you re-establish oxygenation, it will reduce the carcinogenic metastasis. So that's why we call it that if you do ozone therapy, you establish the normoxia. Along with this, you should always do deep breathing. You should always have meditation and yoga, which balances your flight or fright, mechanism, and you have a better breathing. So reversing carcinogenesis, work on oxygenation, which is very important. And when the scientist had measured the PO2, that is, the pressure, oxygen partial pressure, the cancer cells PO2 was 2 to 10 mm of Hg, whereas the normal cell, which we have, which is 40 to 45 mm of Hg. So see the difference, there's a huge gap between oxygenation. And if you re-establish that, it will improve your radiation results, it will improve your chemotherapy results, because the normal cells will be strong. They can fight the reactive oxygen species, which are there, which you are using as a other therapy. It is, so when you talk about medical ozone therapy, it is a mixture of oxygen and ozone. Oxygen will be 99.5 to 95%. The rest is ozone. And what does it do? Ozone will activate your cellular metabolism. So it improves your cell respiration. It modulates your immune system. So it has better disease fighting capacity. And it regulates your antioxidant defense mechanism. So it improves your, or it reduces your oxidative stress. So when we talk about ozone therapy, which is a 3 molecule of oxygen,
which is an energetic molecule of oxygen. So when you say O2, a lot of time patient says, if I take oxygen, will it be okay? So we call it no, only oxygen is not an energetic molecule. But if you do active oxygenation by yoga, of course, that improves the cell transfer of the tissue oxygenation. But when you do ozone, the active oxygen molecule, that the nascent oxygen which is generated, that improves your hypoxia to the tissue. Chronic inflammation can be reduced. Immune system can be improved. Oxidative stress reduction can happen. Infection can be controlled. So ozone is a very powerful germicidal. So any infection which you get along with the disease can be really controlled by ozone therapy. It is a wonderful metabolic controller. So it reduces the acidic, or it improves the glycolysis and makes your body have aerobic respiration. It reduces the side effects of chemotherapy and radiation by improving your general body immunity. It enhances the normal cells, as we say. Agar hamara tan bhala, to hamara, the disease fighting capacity is better. So it will improve that. Gut flora equilibrium. Now, many times, the main reason of lack of absorption, so हम लोग बहुत सारे patients को बोलते हैं कि आपने ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए. So a lot of time patients says that we eat everything. We eat raw salads, we eat normal food, we eat no sugar. These are the main guidelines for cancer treatment in nutrition. But the gut flora is not equilibrium. So you need to have good bacteria in your system. And that good bacteria can have by ingesting a lot of prebiotic and probiotic, which enhances your gut microbiota. Ozone therapy re-equilibriums the gut microbacteria. So the treatment in ozone therapy is a rectal insufflation, which is like an ozone enema, which to an understanding, it's like an panchakarma. If you've heard about ozone gas mixture given per rectum, which improves your gut bacteria. So it re-equilibrates your gut flora. Now, a lot of time you have dental foci. That means you have continuous infection site in your gum. That needs to be corrected a lot of times. So internationally, in Mexico, in Japan, in China, lot of time, all cancer patients have to undergo dental examination, and they have to fix the dental infection, which is very important in the treatment, which is not rampantly done in India. There are few doctors who work on integrated field who do it, but this needs to be, and this is a message for all the people who are listening here. Look at your oral hygiene. Do some squashing, do oil pulling. It improves your oral microbiome, oral good bacteria, which improves your digestion also. And ozone therapy improves your nitric oxide synthesis. So by and large, when you do ozone therapy, it improves your well-being, it reduces your fatigue, and healing is improved. So we have a proper, holistic approach. We don't do symptom treatment. We don't do, disease treatment. We look at patient as holistically. It is patient-centric treatment and not disease-centric treatment. And most of all, we improve well-being of the patient. So ozone therapy improves, the quality of life of the patient. What are the different ways of giving ozone therapy? So the direct of ozone, effect of ozone and reactive oxygen species, the cancer cells in vitro and vivo, that it improves your oxygen metabolism. It upregulates your antioxidant defense mechanism. Immunity is improved. Now, there are a lot of animal studies and a lot of patient studies which we have done for ovarian cancer, for
breast cancer. You can also use it for a lot of other, cancer cells. Like on Shruti, we were working on Hodgkin's cancer. We treat a lot of chronic myeloid leukemias. In acute myeloid leukemias, we've not seen great results. The another thing is that patients do not come to us in acute phase. They usually come to us when they have a chronic established fact that they don't have anywhere to go, and they sought for an alternative or a complementary supportive therapy. So this is more of a biochemistry of ozone, that ozone improves oxygen delivery to the tissue. It enhances the release of oxygen. So not only in cancer, all circulatory disorders, ozone therapy helps in improving tissue oxygenation. Now, this was important in COVID-19 also. We worked a lot in COVID-19 period in Mumbai, in Pune, in different countries where we have doctors who have learned ozone therapy. So we had a good work which we did in COVID-19. So cancer, say to hai, but I'm looking at the by and large work. Ozone improves your interferons, interleukins, and transforming growth factors. So it has reduction in inflammation and reduction in in general inflammatory condition. Then ozone is a very powerful immune system recruitment. So the lymphocytes and the monocytes, which are disease fighting agents, or which improves phagocytosis, which has a natural killer cells, ozone tries to recruit them and work on the cancer reduction. Ozone therapy upregulates your antioxidant defense mechanism. Every cell of a body has antioxidant defense mechanism, and that gets recruited when you do ozone therapy. It is not a chemical. It is in a gas state. It is given in a gaseous form in your body. Now make sure we are using the term gas and not the air. Air is a mixture of everything, which is nitrogen, carbon dioxide, oxygen, and all. We work on pure medical grade oxygen. Ozone has a very powerful antimicrobial result. So by and large, when we do ozone therapy in cancer, it improves your antioxidant defense mechanism. It has an immunological regulator. Oxygen metabolism is improved. So what do we use usually? So we use a detox method. We use nutritional support. We use alkaline diet. We use IV vitamin C. So we have a holistic approach towards it. We use different applications of ozone, which can be rectal, ear, vaginal, which is non-invasive. We use ozone saline, major autoimmunotherapy, which is IV route. We also use minor autotherapy, which improves your immunity. So by and large, we work on holistic treatment. So this is the research paper which was done in June 7 to February 8, where we used ozone therapy on different radiation patients of different variety of cancers. And we saw that the energy levels improved, feeling of cheerfulness, improved appetite, reduction in tumor marker, improved WBC, RBC, and hemoglobin level, which was very important. And the patients, by and large, the acceptance of ozone therapy was very good. And we saw that the patients were really improved better. So I think now from this point, I have few cases. So this is a liver cancer patient who we gave ozone therapy in different ways, and he really benefited. And the doctors had given him a sentence of that he would live for 3 months with ozone therapy, with Ayurvedic, with his diet and all. He lived for 5 more years. So we looking at the quality of life, he could travel to Dubai, he could travel to Australia to his kids. He could live naturally the way he was living. Of course, we did ozone therapy for 3 to 6 months, and then he was put on a diet, put on a regime where he was looking after himself by regulating his general well-being. Like that, we have many other patients, CA breast with axillary lymph node. I think this was the CA breast
the tumor This is very and very interesting and ये तो बहुत ही कहना चाहिए हॉरिफाइंग पिक्चर है कि देखिए फंगेटिंग ग्रोथ है उसमें से काफी तकलीफ पेशेंट को होती है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ये कि ओजोन थेरेपी के 20 to 40 साइकिल्स या जैसे लेने के बाद में और विटामिन सी ट्रीटमेंट के बाद में न सिर्फ सिम्टोमेटिकली पर्सन बहुत अच्छा हो जाता है बल्कि उसका जो डिजीज है वो भी रिवर्स हो गई है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और हमारा ओरल हाइजीन, क्योंकि जो भी चीज आप खाते हैं तो मुंह से ही जाएगी। तो इसलिए यदि आपके मुंह में इन्फेक्शन है, आपके दांतों में इन्फेक्शन है, जैसे जो लोग ब्रशिंग ठीक से नहीं करते हैं, उनके अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं, उनके दांतों में मसूड़ों में प्राय तकलीफ हो जाती है। और ये जो इन्फेक्शन है ये आपके खून में मिलके आपके आपके खाने के साथ में जा करके आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देता है। इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही आपके इंटरेस्टिंग स्टडीज देख के तो कहना चाहिए सब लोग इतने एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे कि ओजोन के बारे में और जानने का और आपके केसेस के बारे में और जानने का। तो थोड़ा डिटेल में और वो भी बता दीजिए डॉक्टर मिली। Okay. So by and large, uh, by and large, what we are talking about, as we are adding it as a supportive therapy, जैसे हम लोग इसको कोई मैजिक क्योर तो नहीं बोलते हैं, पर ये आपको होलिस्टिकली अपलिफ्ट करता है जिससे आप खुद इसको फाइट कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको आपके बॉडी के लिए कंट्रोल में लेने के लिए बोल रही हूँ कि ना कि आप ओनली मेडिकेशन पे रिलाई करें या ओनली ट्रीटमेंट पे रिलाई करें। सो ये आप खुद ब खुद अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और खुद ब खुद उसको थोड़ा थोड़ा करेक्शन पे ला सकते हैं। ओके, तो ये द सीए ब्रेस्ट मेटास्टेसिस लंग, ये भी एक पेशेंट का जो मेटास्टेसिस वाज देयर। नाउ दिस लेडी वाज सो स्ट्रांग, उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं लूंगी कोई भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन, बिकॉज व्हेन शी वाज डिटेक्टेड शी वाज 74 years विद ब्रेस्ट कैंसर। तो उनका वो माइंड था कि मैंने जी लिया है जो है, और अब मैं और कुछ अपने पे नहीं करवाऊंगी जिससे मुझे मेरा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो जाए। तो इनको हमने ओजोन थेरेपी एज अ सपोर्टिव, so this lady was on homeopathy, on diet, and on ozone therapy and lot of vitamin C orally, because उनको आईवी भी नहीं लेना था। बोल रहे मैं आईवी भी नहीं लूंगी, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ होलिस्टिकली जो इजी वेज है जहां पे मुझे कोई प्रिक एंड पेन नहीं चाहिए और मैं ये ट्रीटमेंट अपने लिए करवाऊंगी। सो हमने उनको एकदम होलिस्टिकली अप्रोच दिया एंड बाय दैट अगर ये सब उनके चेस्ट सिटी स्कैन्स है जो प्री एंड पोस्ट, हम देखते हैं कि उनके साइज ऑफ द ब्रेस्ट ट्यूमर रिड्यूस्ड, हर लंग metastasis reduced because ozone works on tissue oxygenation, so that also enhanced and she lived perfectly fine. Now this was the picket. So ये ब्रेस्ट ट्यूमर हम लोग प्री एंड पोस्ट इनको ओजोन फनल करते हैं, ओजोन कपिंग करते हैं, and it can be given in the tumor because when there is a fungating mask, when you give ozone, it works locally and reduces the fungal infection. Ozone therapy was done for 30 to 40 cycles in this patient and it improved. Now this was a patient of CA rectum, which she had a growth on her anus. Okay, it was this thing. We gave her a simple ozone, local application, and it improved general holistically. So in general, ozone in cancer, it is an effective and safe adjuvant therapy. It does not replace your chemo and radiation because we want to work holistically. अगर आप जो करना चाहते हैं आप करिए, साथ में diet, nutrition, work on your emotion, work on oxygen, work on ozone, improve your physical well-being. It will help. It will be really beneficial. It enhances the efficacy and decreases the side effects of. So a very important, many times the oncologist just says, "Aapko karna hai to karo."
लगे काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये अगर अगर ये इसका कीमो के साथ में लेंगे, रेडिएशन के साथ में लेंगे, तो इसकी एफिकेसी रेडिएशन में तो हमने एस्टैब्लिश की है कि यस इट इम्प्रूव्स द efficacy of radiation, and which can be you can see one of our lectures in YouTube with Dr. Arvind Kulkarni, who is an onco-radiologist, and he strongly believes that oxygenation will improve radiation outcome. So ये हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है. कीमोथेरेपी में हम लोग काफी सालों से प्री एंड पोस्ट करते आ रहे हैं. जिस दिन कीमो है वहां पे नहीं करते हैं, उसके आगे पीछे 48 आवर्स उनको छोड़ देते हैं हम, बिकॉज हमको वो बॉडी का रिजर्व चाहिए कि जो कीमोथेरेपी उस पर काम कर रही है. पर हम उसके प्री ओजोन कर सकते हैं, उसके पोस्ट कर सकते, तो सो दैट आपको इम्प्रूवमेंट इन योर इम्यूनिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन योर जनरल वेलबींग मिले. It can be used if the patients are declined by other therapies, by conventional medicine. So I feel the future of ozone or future of treatment in oncology is integration. Why? Because जो हम बोलते हैं ना, एक उंगली काफी नहीं है कुछ लिफ्ट करने के लिए, लेकिन पूरा हाथ या मुट्ठी हो जाए तो इंटीग्रेशन हो जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. Since cancer is multifactorial, I feel you need multifactorial approach in the treatment of cancer. And that is the conclusion remark which I can give is, if you have multifactorial approach in the body, so work on your psychology, work on your physiology, which will help you in pathology, work on your nutrition, work on absorption, work on your detox. It will improve your general holistic healing. And you need to come out as a winner, take a charge of yourself, and it will really benefit. I think this was the last slide. And today, ozone therapy has been used in a lot of countries. In India, ozone therapy is categorized in modern naturopathy. We work with National Institute of Naturopathy to promote ozone therapy. We also do certification programs for doctors in ozone therapy, because it needs to be given holistically, and we need, that's why we chose to come under naturopathy, because it is a natural therapy, it is an oxygen-based therapy. Oxygen and yoga enhances oxygenation. Ozone therapy enhances oxygenation. So we work holistically. Thank you. And here I would say we work on tuberculosis, because in tuberculosis, the main problem is lack of antioxidants. So we work and beautifully in tuberculosis. COVID-19 was again, tissue oxygenation was more problem. Oxygen could not be taken through lungs. So we helped oxygenation out of the lung. So, we could buy rectal, buy ozone saline. We did oxygenation of the normal cell that reduced the cytokine storm, and we improved. We also used it as an immunity builder. And there is many more to it. You can definitely visit our website, which is ozoneforumofindia.com. Thank you so much. Thank you. So I should stop sharing the slide. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Millie. आपने बहुत अच्छे से बताया, और ये हम लोगों को सबको समझ में आया कि ओजोन थेरेपी is not the oxygen therapy as many of us believe. It is definitely different, and it is like the 95% of oxygen and 5% of ozone. And ozone is कहना चाहिए elder sister of oxygen with one extra molecule of oxygen, and so it's more effective. अब बड़े हैं तो भाई काम भी तो बड़ा ही करेंगे, तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. हाँ, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कीमोथेरेपी है, जैसे कि पहले हमारी बात हो रही थी कि कीमोथेरेपी में हमको अपने पीएच के हिसाब से, बॉडी पीएच के हिसाब से डाइट में भी चेंजेस लाना चाहिए. एंड मोस्टली वे एडवोकेट ये करते हैं कि अल्कलाइन फूड ज्यादा लें तो हमें बहुत फायदा होता है. तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि उनकी समझ के लिए कि ऐसे कौन से फूड हैं जो कि उन्हें लेना चाहिए और जिससे कीमोथेरेपी में उनका बॉडी रेजिस्टेंस भी अच्छा हो और इफेक्टिविटी भी अच्छी आ जाए. कौन, आप दोनों ही बताइए.
पहले श्रुति आप बोले, फिर डॉक्टर मिली. let Shruti go ahead. I'll add whatever needs to be. So what I learned from my journey is, of course, when I met Dr. Millie also, that you need to eat a lot of anti-inflammatory food, because inflammation is the root cause for any disease. And of course, while taking chemotherapy, so many doctors confuse you कि antioxidants ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, when you are going towards chemotherapy. And what is alkaline diet? So ये सब मैंने जब समझा कि why should you eat alkaline diet? It's very simple. If your body is alkaline, there will be lesser inflammation. There will be absolute, the body will start healing much more faster. And within a span of 2 weeks, I started feeling the difference. So the foods which are, I feel, there are 5-6 categories where I've divided, and I tell our patients to eat these kind of foods. A lot of greens, beans, vegetables, fruits. These are the basic things. You can add a lot of herbs and spices like curcumin, cinnamon. These are beautiful during cancer. And also take these all these phytonutrients in your diet. Of course, now also one very important thing I would also highly recommend is to people to switch from this pesticide foods to organic food. It made a hell lot of difference to my journey, because I was, without knowing the source of your food, I was eating it. And when I switched to organic lifestyle, I think also because then the chemical load is lesser in your body, and your body starts to detox also much more faster, because the liver can not process too many chemicals, because there's an overload already with the chemotherapy. So the lighter the food is, the better the digestion is, then you start healing faster. So we, of course, I studied a bit after this nutrition courses and studying and cancer diets and stuff. Then we have fixed protocols, and of course, like taking a lot of juices, like your wheatgrass juice, which is very alkaline, petha juice, which is highly alkaline in nature. That also, of course, then adds a lot of value. So greens, of course, I was never eating greens that much. Green patte jo bolte hain. So when you start adding them to your diet, you will start feeling so much better in your stomach. And Dr. Millie can again suggest few more things. So that's very important what Shruti said, the greens. So मेरे language में मैं बोलती हूँ रेनबो डाइट खाइए. So chlorophyll diet, rainbow diet, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत कुछ मिलता है. So simple, आप जो खा रहे हैं उसमें कलर्स ऐड करिए, वैरायटी ऐड करिए. ओके. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रुति को मैंने पहला तो उसका शुगर बंद करवाया था. सो ऑल फ्रैंक शुगर जो हम व्हाइट शुगर बोलते हैं, वो एकदम कम करो, मिनिमाइज करो, बिकॉज द कैंसर सेल्स ग्रो इन glycolysis more of lactic acid environment. So हम लोग जो white sugar है, जो या फिर डायरेक्ट कार्ब्स है, जो सिंपल कार्ब्स है, उसको मिनिमाइज करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे डालते हैं, जिससे पेशेंट का वेलबीइंग, सो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो मैंने बोला वो अचीव हो जाता है. सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइट ऑफ कैंसर. और रेनबो डाइट तो अगर किसी को वो आप जो बोल रहे हो, इवन प्रोसेस्ड फूड, आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, कैन्ड फूड. So that's also one thing which has to be avoided, because we've stopped eating our own millets and our own indigenous grains. So that's very important. हम सब wheat के बारे में, and I of course I stopped eating wheat also. Gluten is also one, all your GMO foods which is genetically modified, which is important to just take away from your diet. Gluten, I feel, is our grains, the wheat, where is the source coming from? We need to go and check in the market कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, which field. Or I did a lot of research, and I think gluten is heavy on your stomach. So I think one thing which you should also avoid during chemotherapy is wheat and gluten. Yeah. बहुत सुंदर ये बात जो आपने कही, वो ये कि
जैसे आप खीरा खाते हैं, नींबू खाते हैं, नींबू का रस लेते हैं, नींबू का रस समझते हैं कि खट्टा है तो एसिडिक होगा, ऐसा नहीं है। उसकी जो तासीर होती है वो अल्कलाइन होती है। तो इस तरह से हम अगर अपने खाने के अंदर परिवर्तन करते हैं, ग्लूटेन फ्री, मतलब कि अगर गेहूं को आप कम कर दें अपने खाने में और उसकी बजाय जो ज्वार है, बाजरा है, इसे अगर बढ़ा देते हैं तो नेचुरली आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और साथ में केन फूड नहीं लें, मतलब कि प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं या जिसे कहते हैं जो रेडी टू ईट फूड है, वो नहीं खाइए। अगर ये आप इन चीजों से बचते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर में काफी ताकत आती है और आप बीमारी से बहुत दूर रहते हैं। जो चीजें आपको रेडी टू ईट मिलती हैं, प्रोसेस्ड फूड मिलता है, वो बहुत पहले बना होता है और उसको कहना चाहिए कि खाने योग्य बनाने के लिए काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और ये केमिकल्स आपके शरीर पे बहुत ही खराब असर करते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ताजा खाइए और मस्त रहिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेशली कुक्ड फूड, घर का बना हुआ खाना जितना आपके लिए सेहतमंद है उतना ही आपके पॉकेट के लिए भी हल्का है और आपके शरीर के लिए भी, और आपको बहुत ही सेहतमंद बनाएगा। तो जी एक मिली, चीज आप यहाँ कुछ कह पे, रही थी। yeah, I really want to, so eat natural, eat local, that should be your fundamental. जो हम बोलते हैं अरे ये वॉशिंगटन एप्पल्स है ये खाइए, नहीं, it's better to have a banana which is grown locally. अगर बोलते हैं कि ये चेरीज, पीपल हैव कि बेरी डाइट करेंगे या फिर बहुत सारा ब्लूबेरीज ये वो, नॉट रिक्वायर्ड। आप ऑरेंजेस खाइए जो नागपुर से है, ठीक है। सो ईट नेचुरल, ईट लोकल। व्हीट में भी एक द प्रॉब्लम क्या हुआ है इज मॉडर्नाइजेशन। सो व्हीट में एक जर्म है विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, जो हम पॉलिश व्हीट लेते हैं उसमें वो निकल जाता है, इसलिए उसमें सिर्फ ग्लूटेन बच जाता है। लेकिन अगर आप व्हीट विथ जर्म खाएंगे तो वो नेचुरल है, विच इज वेरी गुड। सो अगर तो हम लोग इसको बोलते हैं खपली गेहूं। खपली यानी गेहूं विच हैज अ कवरिंग, वो उसके साथ वाला गेहूं का आटा खाएंगे तो चलेगा। लेकिन ओनली पॉलिश राइस जो हम खाते हैं तो वो नहीं खाना, पॉलिश राइस या पॉलिश गेहूं जो है वो नहीं खाना चाहिए। सो और दूसरा, ये डाइट आप अपने मन से करें। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो दुखी हो के रो रो के वो डाइट वाला खाना खाते हैं, तो वो इट वर्क्स अगेंस्ट यू। whatever you are doing, please, Shruti, you are on a silent, I'm saying you were- mindset is so important. We've figured out with our patients also that if they're not acceptance, it will never work for them. तो वो अपने आप को पहले तो प्रिपेयर करना चाहिए अपने माइंडसेट को, और वो जैसे रूट कॉज अगर समझ लेंगे कि ये डाइट हमको ये फायदा करेगी, तो डेफिनेटली वो माइंडसेट भी चेंज होगा। लेकिन अगर आपको उधर जाना ही नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल, पीपल डू अ लॉट ऑफ इमोशनल ईटिंग, उनको बहुत खुशी मिलती है कुछ ऐसे जंक फूड और ये सब खाने से, तो पता होना भी चाहिए कि एक्चुअली हमारी बॉडी क्रेव क्या कर रही है। वी आर लिविंग इन डिनायल, वी आर लिविंग एब्सोल्युटली एंड वेरी अनकॉन्शियसली, वी डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर आवर बॉडी एंड नॉट। सो वो बहुत सुंदर, बहुत सही बात कही। और वैसे भी जो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉलिश, जो चमकीले और रंगीन और इस तरह के फल फूल सब्जियां, इनसे दूर रहिए। हाँ, अगर आप नागपुर में रह के संतरा नहीं खाएंगे तो जरूर आपको नुकसान होगा। नागपुर में रह के ब्लूबेरीज के पीछे मत भागिए। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। और जो चीज जहाँ पैदा होती है, जो जितनी जल्दी मिल जाती है, वो न सिर्फ सस्ती होती है बल्कि वो उस जगह की खासियत होती है, उस जगह की, कहना चाहिए प्रकृति ने हमें दिया हुआ एक सौगात होती है। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जहाँ चावल होता है वहां हम अगर गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की बात करें तो शायद वो हमारे लिए इतना लाभदायक ना होगा। पर यदि वैसे, और दूसरी चीज ये है कि पॉलिश राइस, पॉलिश व्हीट, गेहूं से, पॉलिश पल्सेस, दालों से बचना चाहिए।
ये पॉलिश उनकी कहना चाहिए लॉन्गेविटी, मतलब उनको खराब होने से बचाता है पर साथ ही हमें बहुत ही नुकसान करता है। एक और प्रश्न जो आया है अभी कि जब भी कोई बीमारी होती है या कोई क्रॉनिक हम कहना चाहिए परेशानी में होते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत अधिक विचारों में ग्रस्त हो जाता है। और तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो हमने जाना डाइट के जरिए हम कर सकते हैं, बट हाउ टू डिटॉक्स माइंड? Okay. So I would, of course, there are a lot of ways to detox mind. The most important is accept what you have. There is one psychotherapy which is called EMDR, that is eye movement detox. Basically, this is done under supervision of a psychologist. You can find out EMDR. It kind of improves your trauma. So basically, it takes you to a trauma memory, and with your eye movement, you're releasing those memories. This was I have studied because I've done psychotherapy, but it had, vanished away from my memory that, okay, this is, we do a lot of self-talking, we do a lot of affirmations, we do a lot of improvement in your outlook and perspective towards life, positivity towards life. But this EMDR has been working very well. And this was told to me by one of my patients that, okay, I did this also. And that clicked to me recently that yes, this is also a very, very important, that the storage of your memory needs to be released. वो बोलते हैं वो ग्लास को empty करना बहुत जरूरी है. Yeah. So glass empty कीजिए तो नया अच्छा you can put in. If the glass is filled with negativity and it is not emptied out, it will not have the the result. So empty your glass daily. One can be gratitude, one way it can be affirmations, one can be your meditation. There are many ways, each one has its own way. Find what is suited to you, find what works for you. I think that will be the best way to detox your mind. Shruti, you can also. Yeah, I think what really worked for me is, as you said, acceptance, gratitude, journaling, breath work, meditation, and also figuring out. I think we need to just take a step back and understand what is that one real good passion. What are you living for? Think that if you can figure it out, because if people are just living life without unconsciously, and they're not living consciously. And one thing which really helped me in was, as I said, nutrition. The moment I started looking into details of things, why am I eating, what is my why in life, why am I doing certain things, it just started getting clearer and clearer. And now you start living more, now I've started living more consciously, and and it's effortless now. I know that I have to do certain things for my body, I have to do certain things for my mind, I have to do certain things for others, or for my family, or for my business. So this is something which, then if you start compartmentalize and fragmenting your life this way, and then you will sleep better, you start feeling you have contributed to other people's life, or to someone who needs help. I think even doing a little bit of giving your energy to other people who require it. It can be a street dog, just go and pet him. Giving something happiness to others actually gives you happiness. So I think these are the few things which I felt doing. And when you do these things, ultimately you'll have you will change as a person. डेफिनेटली। तो हमने ये जाना कि हमें पहली बात तो ये कि किसी के ऊपर भी अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, और नहीं अपना रिमोट किसी को देना चाहिए कि वो उसने बटन दबाया और आपको गुस्सा दिला दिया या आपके मूड को बदल दिया।
दूसरी चीज ये कि अगर हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि ये बदल सकें, पर यदि बदल नहीं सकते हैं तो हमें उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दैट हेल्प्स। और तीसरी चीज ये कि हम जैसे कि परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, अपने आप को यदि नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट द थिंग्स, अपने आप को भी और दूसरे को भी स्वीकार करें। क्योंकि जैसे पहले भी हमने कहा था कि सृष्टि बदलती है दृष्टि बदलने से, तो अपने आप के अपने आसपास को सबको हम बदल सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आप दोनों ने हमारे साथ में आज उपस्थित होके हमारा जो ज्ञानवर्धन किया, जो हमें कहना चाहिए इंस्पिरेशन दी, उसके लिए हम आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा, क्या समझा। तो दोस्तों, हमने जाना कि श्रुति ने, जो कि एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको हॉजकिंस डिजीज डायग्नोस हुई थी, और उसके बाद में जैसे हमेशा होता है कि एक हेल्पलेसनेस की अवस्था आ जाती है, उसमें उन्होंने अपने आप को निराश नहीं होने दिया। अपने उन्होंने देखा कि उनकी खाने पीने में क्या गड़बड़ियां हो रही थी, वो जो जंक फूड वगैरह खा रहे थे उन्होंने वो बंद किया, अपने स्ट्रेस लेवल्स को, अपने सोच को बदला, मेडिटेशन किया, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, और योगा अभ्यास किया, फ्रेश फ्रूट्स खाने शुरू किए, और साथ में ही डॉक्टर मिली के साथ में मिलके उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया और एक पॉजिटिविटी आई, और ओजोन थेरेपी से उन्हें बहुत लाभ हुआ। कई और केसेस के बारे में भी हमने जाना, जिसमें एक लंग कैंसर के बारे में जानकारी मिली, ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी मिली, और इन सब से देख के हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से, मतलब कहना चाहिए कि समान ही गैस है, जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको उसकी बड़ी बहन कह सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी एनर्जेटिक एंड प्रोवाइड्स लॉट ऑफ, कहना चाहिए हमारे शरीर में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करने में लाभ होता है। कि जितना अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है उतनी अच्छी हम फाइट कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप इन्फेक्शन से बचते हैं तो आपकी आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, एंड इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर गुड थिंग। ना एक चीज और जो बहुत ध्यान में देने की है कि ओजोन थेरेपी इज वेरी गुड प्रोवाइडेड हम ये जाने कि हम किस लिए ले रहे हैं, और हम इसके साथ में दूसरे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसको भी लेते रहें। और जहाँ पे जैसे जैसे हमारी तबीयत में सुधार होता है, हमारी दवाइयाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। ओजोन थेरेपी का लाभ हमें क्रॉनिक बीमारियों में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट डिजीज में, लंग्स प्रॉब्लम में, अस्थमा में, कैंसर में, ट्यूबरकुलोसिस में, and lot many. It's the list is long and it is showing very good results. And कोविड टाइम में, जबकि एक बहुत ही हेल्पलेस सी अवस्था थी, जब हमारे पास में उसको ट्रीट करने के तरीके नहीं थे, हम नहीं जानते थे कैसे करें, तब एक कहना चाहिए ईश्वरीय वरदान के समान ओजोन थेरेपी आई। और डॉक्टर मिली हमें तब मिली तो बस उन्होंने एकदम दुनिया ही पलट दी। तो हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, और साथ ही हम अपने दर्शकों का और अपने जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत आभार देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे स्तंभ हैं और हमें आगे से आगे प्रोग्राम करने की प्रेरणा देते रहे हैं। और इसकी एक बात और कि जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जूम पे हैं, और उन सबका बहुत बहुत आभार। और हम आपसे फिर से मिलना चाहेंगे, श्रुति एंड डॉक्टर मिली, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी ये आज की मुलाकात ही आखिरी मुलाकात नहीं है, हम फिर से मिलते रहेंगे और आपकी बात सुनेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विंग कमांडर विद्याकांत काला साहब को कि वो आए और हमारे आगामी प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी दें। काला साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। You're on mute, sir.
Sir, you're on mute. You're not audible, Kala साहब, कुछ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एडमिन ने सबको म्यूट कर दिया था क्या? उनको अनम्यूट करना चाहिए। यू आर अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट करें। जितेन, प्लीज अनम्यूट काला सर। Azhar, please check. Azhar, please. Got it now. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Finally, thank you so much, Dr. Rashmi, इतने बढ़िया से सेशन को मॉडरेट करने के लिए। और मेरे श्रुति जी, आप तो you are a big inspiration, for everybody who comes in contact with you. You are an example जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, आप उस मुहिम पे निकले जो आप दूसरों की जिंदगी भी बदलें। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, and we look forward to continue to associate with you and work with you, as Dr. Rashmi said, जिससे कि हमारे और भी दर्शकों को फायदा हो। और डॉक्टर मिली जी, कुछ चीजें जो मैंने नहीं सीखी आपसे, अब तक दिमाग में ये था भी पैथोलॉजी इंपैक्ट करती है डिजीजेस को, बट इट्स फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आल्सो दैट इंपैक्ट्स। So far we used to hear you are what you eat, but we also learned, not only what you eat, but what you metabolize, what you absorb after metabolization, and then how you detox yourself. और डिटॉक्स का एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज आज सामने आई वो थी हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया, कि हम श्वास कैसे लेते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 सेशन अभी रिसेंटली कंडक्ट किए थे, जिनका फोकस सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर था, और शरद कामरा जी हमारे साथ में है। तो अगर आपको उसके ऊपर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो शरद जी हैं जो आपको उसमें मदद कर सकते हैं। और हमारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे हैं, प्लीज गो एंड ऑब्जर्व देम। दे आर प्योरली फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग, हाउ डू यू ब्रीथ राइट। और आज जैसा हमने सुना कि ब्रीदिंग एक मेजर मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जो भी हमारे अंदर दूषित चीजें पैदा होती है बॉडी में, उनको बाहर फेंकने के लिए। एक और चीज आज हमने सीखी वो थी कि गट हेल्थ, गट फ्लोरा इज सो इंपॉर्टेंट, उसको आज लोग दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। और हमारा अगला सेशन जो है वो उसी के ऊपर है। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड शेयर अ पावर पॉइंट। Is my screen visible? Okay. Not yet, sir. Yeah, now it is. Yes. My network is slow. My apologies for it. So our next series is focused on gut health, food. आजकल एक नया टर्म सुनने में आ रहा, फंक्शनल फूड, उसकी भी बात करेंगे हम, और न्यूट्रिजेनोमिक्स। न्यूट्रिजेनोमिक्स जिन लोगों ने नहीं सुना वो ये है कि जो हम खाते हैं वो हमारी जीन्स पे कैसे इंपैक्ट करता है, और उसका हमारी बीमारियों को ठीक करने में या बीमारियों को पैदा करने में क्या असर होता है। ये हमारे 3 सेशन होंगे इसके। संडे 31 जुलाई को पहला सेशन है, समय वही रहेगा 11 बजे का। उसके बाद दूसरा सेशन है 7 अगस्त को, तीसरा है 21 अगस्त को। 14 अगस्त को हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि वो एक लंबा वीकेंड है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का वीकेंड है। और उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे हमारे डॉक्टर श्रेयस कुंभारे, जो कि गट हेल्थ के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, न्यूट्रिजेनोमिक्स पे भी, और डॉक्टर वंदना गर्ग जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे आप पहले भी मिल चुके हो। और इसके अंदर मॉडरेटर रहेंगे हमारी डॉक्टर रश्मि जैन। तो प्लीज कम एंड ज्वाइन इन दिस सेशन एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। हमारे पार्टनर्स का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनमें हमारे स्ट्रेटेजिक नॉलेज पार्टनर्स हैं, कम्युनिटी पार्टनर्स हैं। We have area development partners and corporate wellness partners, NGO partner, wellness partners in CK बिरला हॉस्पिटल। ये सब लोग हमारे को मदद करते हैं प्रोग्राम्स को बनाने के अंदर और उनको प्रोपेगेट करने के अंदर, मैसेज को प्रोपेगेट करने में आगे। प्रोबोनो पार्टनर्स हैं जो हमारे को रन करने में मदद करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, आपका लीगल हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हो। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो मदद करती हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी जो एडवाइजर है हमारे,
डॉक्टर शीला नाम्बियार जी, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन की जो बॉडी इंडिया में उसकी चेयरपर्सन है। देन डॉक्टर रश्मि जैन से तो अभी आप मिल ही चुके हैं। देन वी हैव डॉक्टर सुनील जैन और डॉक्टर छवि मेहरा जी। हमारी को टीम जो मदद करती है हमारे को, हरमिंदर मुल्तानी जी, आदि गुरुदास जी, जितेंद्र गौतम जी और आरुषि जैन जी। हमारे एम्बेसडर्स महावीर प्रताप शर्मा जी, नीता बूचरा जी और मेजर जनरल सीपी सिंह साहब। हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारे फाउंडर जिनका सारे दिमाग की उपज है वेलनेस कोड, मिस्टर नरेंद्र बख्शी साहब, जो कि खुद भी एक हेल्थ हीरो के एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपना वजन ऑलमोस्ट 40 kgs तक कम किया और उसके साथ काफी बहुत सारी बीमारियों से निजात पाई। माई सेल्फ विंग कमांडर काला, वी हैव सोमनाथ चैटर्जी, वो भी यूएसए में रहते हैं, शरद कामरा जी, तुषार गर्ग जी, उमरदीन जी और मोहम्मद अजरुद्दीन जी। आप लोग हमारे से कनेक्टेड रह सकते हैं, हमारे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है द वेलनेस कोड चैनल। फेसबुक पे आप मिल सकते हैं हमारे साथ, इंस्टाग्राम पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सब पे हम लोग प्रेजेंट हैं और ये उनके लिंक्स हैं हमारे। ये आपको हमारी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि हमारा अगला सेशन जो है वो गट हेल्थ के ऊपर है, जिसके बारे में हमने आज इतना सुना। फूड के ऊपर है, उसके ऊपर भी हमने सुना। दिनांक और तारीख आपके सामने है, साथ में एक्सपर्ट्स भी हैं। और जैसा कि हम बार बार बताते रहे, हम लोग अभी एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। वी आर माइग्रेटिंग टू अ सेक्शन 8 कंपनी विच इज द नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विद द नेम क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन। आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं www.thewellnesscode.org. You can also reach out to us on WhatsApp on 733-995-1157. So एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे स्पीकर्स का, श्रुति जी का, डॉक्टर मिली का और मॉडरेटर डॉक्टर रश्मि जी का, और हमारे सब सपोर्टर्स का और हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।